Hey guys, I'm Disha and today I will be recording for you everyday makeup look. Let's get started. First, I moisturize my skin and then I put the sunscreen on. This one is by Dr. Sheth's. And then I start with my concealer. So I'm using MAC concealer. I guess the number is 42. You can use whatever shade suits your skin. This concealer right here has a very brown orangey feel. Okay, so it also helps me color correct the dark circles. I will only apply it around my eyes, around my mouth, because there is where my skin is a little darker as compared to my other parts of the face like cheeks and forehead. So I just use a wet beauty blender and you can see I take it from the container directly on the beauty blender and then just blend out around my mouth, my eyes, on the upper lids also. I will apply it but blend it very nicely. I will just show you how it looks after blending. Here you can see in natural light, this is how it looks blended, and it also color corrects because it has a little orange undertone. I am not using the color corrector today because this is my everyday makeup look. I don't use too heavy makeup. This one is the foundation which is F9.5 and this is by Makeup Revolution, and now I will be using it on the entire face and blending it again. So as I was telling you before, I just do this is my routine for everyday makeup. They might be wrong, they might be right, but just that it works for me and I like doing it like this, and I really do my everyday makeup in like 20 minutes. Actually 20 minutes I take to do this entire routine. Today I was recording, so probably I took like almost half an hour to get ready, but this is my everyday routine. I do not say, again, I'm not a makeup artist, I don't say that this is correct or this is wrong, but it is what works for me. So here you can see with the wet beauty blender I am just dabbing and blending my foundation entirely. When I'm going for a party or I'm doing some heavy makeup look, then I use the color corrector separately, but every day I just quickly use the concealer, the MAC one, and then the foundation hops in, and I am just blending it very nicely throughout my face. Wet beauty blender helps you to blend the foundation really nicely. I am I have just, my aim is to get a one tone face. I don't want to hide my acne marks or anything. It is just absolutely fine. I want to stain my skin. I have a small pimple on my chin area, which is absolutely fine. I just want a single tone, a little something to my face, a little brightness to my face. That's it. Now I'm using a light concealer by Maybelline only on the higher sections of your face, as you can see, and under the eyes to get the brightness. And again with the same beauty blender, I'm going to blend it nicely. That beauty blender really helps you to blend and like get it absorbed in the skin so that it looks natural. Again, I will show you in the natural light quickly. See, that's how it looks. So it's nice and blended. That's it. Okay, so now I'm using this Makeup Revolution eye palette, and I use this pressed white powder to set my under eyes. Yes, it's a very good trick. I use whatever products I have to the fullest, and that is how I work. Okay, again, it might be wrong, okay, but it works for me. That is it. So I am going to, wherever I have put the light concealer, I'm going to set all those areas with this pressed powder. And mind you, if you have a little like a dry skin, the pressed powders are better. Okay, now I'm using the Sephora loose powder for the rest of my face. And I'm just going to take a fluffy brush and tap it and then just blend it very lightly on the entire face. That is how I am going to set the foundation on the other parts of my face.
Obviously, I mean, the brush goes on the entire face, but I'm just very, very quickly blending it. Everything comes together with this loose powder. This is Sephora, the shade, I don't remember the shade, but just you can go and check out whatever shade suits your skin. Now I'm going with this Makeup Revolution bronzer, which is a matte bronzer in tone warm. There is a cold tone also, but I like the warm tone because I like my blush to be really nice and visible. Alright, so I'm just contouring my face and it really makes a difference, guys. Contouring बहुत हेल्प करता है आपके फेस को एक शेप देने में. तो इसको हम लोग चीक बोन के नीचे लगाते हैं and then now I'm applying under the chin area, which gives a little like a shape to my jawline, and I'm contouring my nose. Very quickly I do these steps. Believe me, these are my everyday steps, so I don't even think twice before doing it. So these are the exact spots I touch every single day. That's it, it goes in, and now comes the blush. So I'm using this MAC palette which has 4 very beautiful pinks. Whenever I want to apply pink shade, and this is a very corally shade actually, the one that I'm applying, but I use this a lot. There is another Kiko orange blush that I have, which is number 44. वो भी मैं बहुत use करती हूँ, but ये वाला मैं काफी use करती हूँ whenever pink is going on my skin, and I just blend it with the bronzer. And on the chin area, a little bit on the forehead, the nose, everything can be covered very, very lightly, like nothing too much. That's it. Next, let's move to my eyebrows, which is very important, mind you. अगर मैं किसी दिन कोई मेकअप नहीं भी कर रही होती हूँ तो भी मैं आईब्रोज फिल जरूर करती हूँ, बिकॉज आई हैव लाइट आईब्रोज एंड आई डोंट गेट माई आईब्रोज मेड वेरी frequently. I get them made like 4 months, 5 months later on when if I'm doing and attending some function or something. But see, you can see my eyebrows are not actually made, but after filling them in, वो काफी अच्छी shape में नजर आ रही हैं. So this is Nykaa का pencil, and I have realized that जो retractable pencils होती हैं वो बहुत कम चलती हैं और बहुत महंगी होती है. So मैंने ये एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा है. Nykaa की पेंसिल है, इसे शॉर्पन कर लो. इसमें एक तरफ स्पूली है और एक तरफ पेंसिल है. सो इट वर्क्स वेरी वेरी गुड. स्पूली बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ब्लेंड आउट द पेंसिल का मार्क. Okay, so see the difference. Now we move on to the Blue Sky eye palette, and I use the fluffy brush and this very very light shade to just put it on the upper crease area. और मैं इसको बस blend कर रही हूँ. Everybody says that I might be taking a long time to do my eyes, but actually no. अब मैं उसी एक डार्कर वाले कलर पे जा रही हूँ और उसको मैं सिर्फ क्रीज एरिया में लगा रही हूँ. सी जस्ट लाइक ऑन द क्रीज एरिया, और उसको ब्लेंड कर दो ऊपर वाले के साथ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको ये ब्लेंड करना है. उससे मैं हल्का हल्का नोज कॉन्टूर भी कर लेती हूँ. और अब ये मैंने ग्लिटर अपनी थर्ड फिंगर के ऊपर दोनों ग्लिटर शेड्स मिक्स करें. इट्स वेरी शिमरी शेड्स, और उसको मैं बस आईलिड पे अपनी उंगली से लगा लेती हूँ. इसके बाद बस मैं ब्रश से वापस से उस ग्लिटर को मर्ज कर देती हूँ मैट के साथ, सो दैट कोई हार्श लाइंस नजर ना आए, और इस तरह से मेरी आंखें रेडी हो जाती हैं. अब इसके बाद हम एक न्यूड काजल लेते हैं. सो बेसिकली आई रियलाइज कि जो व्हाइट काजल होता है वो हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा सूट नहीं करता है. ठीक है, तो ये एक न्यूड काजल आता है वेट एंड वाइल्ड का, आपको नायका स्टोर्स पे मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो. एंड जस्ट टू पुट ऑन योर वाटर लाइन जिस दिन आपको काजल ना लगाना. उसके बाद फिर मैं उसी ब्लू स्काई की आई पैलेट में से जो सबसे डार्केस्ट कलर है, एक पेंसिल ब्रश से उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ. अगेन, अगर आप अपनी लोअर लैश लाइन नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो. आपको पता चलेगा कितना डिफरेंस आ जाता है आपकी लुक में लोअर लैश लाइन पे आई शेडो लगाने से. और इससे ना वो आपका काजल भी नहीं फैलता है. इन केस अगर मैंने काजल लगाया होता तो भी मैं यही स्टेप्स करती, लाइक ब्लैक काजल लगाती तो भी यही स्टेप्स करती. सी, इसको एक बार रिपीट करके देख लो, क्योंकि हो गया ये बहुत जल्दी जल्दी निकल गया. सो मैंने उसको नीचे को जो लोअर लैश लाइन है उसको ब्लेंड भी कर दिया वापस से ब्रश से. अब मैं वही जो मैंने आई शेडोज यूज करी है उन्हीं को हल्का सा मैं चीक पे लगा के उसको आई शेडो के साथ ब्लेंड दे रही हूँ, सो दैट माई फेस लुक्स अ लिटिल लिफ्टेड. That's it. अब हम लोग मूव करेंगे मेरे स्प्रे पे, विच इज अ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. ये मैं हमेशा मस्कारा से पहले करती हूँ. इससे मेरा सब कुछ सेट हो जाता है. ऑल द पाउडर्स, ऑल द लिक्विड्स, दे कम टुगेदर एंड दे गेट सेट. इसको आप मस्कारा से पहले कर लो, वरना अगर आपकी आंखों में गया और आपने आंखें थोड़ा सा भी टाइट बंद करी तो वो सारा आपकी आंखों के चारों ओर लग जाएगा. मस्कारा मैं नायका का यूज कर रही हूँ. आप कोई भी मस्कारा यूज कर सकते हो जो भी आपका पसंद का हो. इससे पहले मेरे पास सेफोरा का मस्कारा था. अब दूसरी ट्रिक ये होती है कि हमें हमेशा मस्कारा हमारी लोअर लैशेस पे भी लगाना चाहिए. अभी आप देखना, मैं लोअर लैशेस पे भी लगाऊंगी
थोड़ा ध्यान से लगाना होता है एंड देन आई विल शो यू द डिफरेंस लोअर लैशेस पे लगाकर. इट इज योर आईज लुक मोर ओपन. अभी इसी को मैं थोड़ा और इंटेंसिफाई करूंगी. मुझे मस्कारा लगाना बहुत पसंद है और मस्कारा अच्छा भी लगता है. आई मीन आंखों को थोड़ा सा खोल देता है एंड आई हैव वेरी स्मॉल आईज सो आई फील दैट मस्कारा रियली हेल्प्स मी ओपन अप माय आईज विद द न्यूड काजल. वो भी बहुत अच्छा लगता है. एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मस्कारा की कि अगर वो स्किन पे लग जाए तो उसको इमीडिएटली ना पोंछे, उसको सूखने दें और जब वो एक बार सूख जाएगा उसको एक ईयरबड लें और उससे हटा दें, वो इजीली हट जाएगी. चलिए अब let's do the lips now. So I'm using Jeffree Star lipstick Gemini and the lip liner is by Nykaa. और नायका पे बहुत सारी डील्स चलती रहती हैं, आप देखते रहो नायका की साइट पर. उस पर बाय वन गेट वन फ्री की डील चलती है. यू गेट फ्री प्रोडक्ट. सो मैं बस डील्स में काफ़ी फ़ायदा उठा लेती हूँ. अपना जो भी मुझे चाहिए होता है आई एम वेरी माइंडफुल इन बाइंग. सो मैं बहुत देख के समझ के जो भी मुझे चाहिए होता है मैं वो ले लेती हूँ. सो मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ, थोड़ा आउटलाइन कर रही हूँ. मैं लिप्स को आउटलाइन मतलब अपनी लिप्स से थोड़ा सा ऊपर जाके लगा रही हूँ और उसके बाद मैं हल्का सा लिप लाइनर से फिलिंग भी करती हूँ. एंड देन आई विल बी यूजिंग द जेफरी स्टार लिक्विड lipstick Gemini. This is my everyday shade. Like believe me, it's my everyday shade. I just feel that या तो ये या फिर MAC का टोप PAUPE, ये मेरे दो गो टू शेड्स है. इसके बाद मैं एक बार और स्प्रे कर लेती हूँ वेरी वेरी लाइटली. केयरफुली करेंगे ताकि मेरी आईज में ना लगे. एंड आई विल जस्ट लेट इट ड्राई. आप इसको पैक भी कर सकते हो अपने वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टू गेट इट इन द स्किन. और इस स्टेप के बाद अब हम करेंगे थोड़ी सी हाईलाइटिंग और उसके लिए मैं वापस से मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट यूज करूंगी एंड आई एम जस्ट यूजिंग एन आई शैडो एज माई हाईलाइटर एंड यू विल सी द डिफरेंस very very quickly. Just look at that shine seriously because केवल यही एक शेड है जो एज अ हाइलाइटर अमेजिंग काम करता है. हाइलाइटर जो है वो ग्लिटरी नहीं लगना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाई शाइन वाला आई शेडो होना चाहिए जिससे आपको एक अच्छी सी शाइन मिले. और इसी को मैं जहाँ जहाँ पे मेरा हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस है वहाँ पे मैं हल्का हल्का सा लगाऊंगी. नॉट एवरी डे, आई डू नॉट पुट टू मच. चलिए तो नाउ लेट्स जस्ट comb our hair which are a mess right now and after that we'll change the clothes and quickly get ready for the studio. And I hope you would like the video and if you like it do subscribe the channel, like, comment and let me know how did you like it. You can also find me on Instagram at Disha Art and I have a nail studio. In case you don't know, just follow me on Instagram, you'll know all about me. Bye.